ऐसा है now owner makes a nomination to his wife and he's got two children. Now owner dies, wife became a provisional member. Can the wife make a further nomination without being the owner? You can nominate something which you own. Which you own, basically. Now the argument is given by her lawyer is that my other two children will issue a release deed in my favor, so I become the owner. I said no, you get entitled to the ownership. You don't become the owner. Technically you're right. But when you get the release deed and the release is presented, then application form will come with the entire explanation. That is the time you talk about you become owner, that you have become a full shareholder. That is treated that way. Shareholder, not the owner. And release deed में क्या होता है? काफी बच्चे लिखते हैं, the children are overseas. They say lifetime interest of the mother. Yes. We are releasing for the lifetime interest of the mother. क्योंकि मदर के बाद उनका नाम लगना है, तो अपना राइट रिटेन करते हैं और रिलीज में लिखते हैं we are releasing for the use of the mother for the lifetime interest of the mother's life. Right. तो वो भी ध्यान रखना है, वो लॉयर जैसा लिखता है उसके हिसाब से we go to. But can such a provisional member make further nomination because she has not become the owner as yet? No, once she gets released from everybody else, she is a member. Okay. Once she becomes a full member, she can nominate, and nomination will also be as a member, but will be subject to the same trusteeship. तो अगर order आता है, somebody has to hold the fort. Right. So that will be again a nominee का nominee रहेगा, वो नहीं बनेगा. अगर order आ जाता है court का, that has to be followed. Any other question? Thank you. Good evening, madam. I am Rajani Rajamdi. Sir, actually, I am an LIC agent. मेरा पार्टी है, उसका मम्मी का डेथ हो गया 2010 में. But she bought a flat in Kalyan on 2000. I mean 99 I think. But वो उस टाइम पर इतना रजिस्ट्रेशन नहीं था ना. 10 rupees stamp में she got registered it actually. No, not 10 rupees stamp में कुछ लिख के ऐसा कुछ है. तो अभी उसका डेथ हो गया, नॉमिनेशन भी नहीं है, मगर the society is giving the bills, maintenance bills is given in the son's name actually. But अभी son का भी डेथ हो गया, अभी उसका कैसे मैं चैनलाइज कर सकता? You will need lawyer. You are asking a legal advice, not an interpretation of the law. आपको मैं थोड़ा guideline दे सकता हूँ. I will not give you a legal opinion. I will not give you a legal opinion, but I can give you a guideline. वो शेयर सर्टिफिकेट अगर है तो शेयर सर्टिफिकेट में किसका नाम है वो देखना है. एग्रीमेंट से सोसाइटी एक्चुअली शेयर सर्टिफिकेट में सर ये किसी से लिया है ना घर, दिस सेकंड सेल है, वो फर्स्ट वाला का नाम है शेयर सर्टिफिकेट में, वो भी अभी ट्रांसफर नहीं किया एक्चुअली. फेयर एनफ. तो प्रोसेस फॉलो करना है, अपने नाम पे लाने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना है. तो देन फॉर दैट प्रोसेस यू विल नीड टू टेक लीगल एडवाइस, बट इट इज डूएबल. लेट मी पुट इट दिस वे. तो डूएबल है, ये नहीं कि नहीं होएगा, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस फॉलो करना. बेसिकली उनका कंप्लेंट है कि उनको नॉमिनेट किया गया है, उनके फादर एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने बिल्स मांगे सोसाइटी से, अरियर्स बाकी है, सोसाइटी नाम भी चेंज नहीं कर रही है और अरियर्स के बिल्स भी नहीं दे रही उनको. तो नॉमिनेट फादर के नाम पे फ्लैट होगा. आई अंडरस्टैंड फादर के नाम पे फ्लैट है. यस सर. इट डजंट मैटर. देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर ट्रांसफरिंग, सो देयर इज नो लिमिटेशन. यस सर. तो उसके बाद आप जो प्रोसीजर है, अगर नॉमिनी है, then you can take a benefit of the law. Yes sir. As she told you, बाफना मैडम जैसे बताया आपको कि 18 में मैंने उनको नॉमिनेशन एक्नॉलेजमेंट जो सोसाइटी ने किया था 2001-2-3 में, that was given to the society and thereafter society didn't contact him further anything like. So in March I met them. So that time they told me कि आपको जो है पिताजी का एरियस वगैरह देना पड़ेगा. So I said, okay, give me the accounts. Stop. Yes, sir. Don't jump the gun. We are looking only at nomination, not at arrears. Yes, so sir. we just stick to nomination. Yeah. Number one, nomination is your right. Yes, sir. So they cannot confuse nomination with arrears. Arrears, correct. Arrears is their duty to collect. Yes. If they cannot collect, they are supposed to go under the old 101 or the new 154 section to recover. Yeah. तो वो कंफ्यूज नहीं कर सकते, उनका ड्यूटी है रिकवर करना, कोर्ट में जाए रिकवर करें.
यस सर, हमारा नॉमिनेशन मेरा राइट है, आप मेरा नॉमिनेशन दे दो और उसके हिसाब से करो। अदरवाइज रजिस्ट्रार के पास जाके बोलो हमारा नॉमिनेशन है, उसको डायरेक्शन दे दो, प्लीज ओके गिव सर, डायरेक्शन टू सोसाइटी टू दिस डू दिस। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट है, आपके फादर का डेथ कब हुआ है? 2009 सर। वेरी गुड। अभी पास्ट मेंबर का डेट लिमिटेशन में आता है, या और पास्ट मेंबर का विद इन 2 years दे हैव टू कलेक्ट, उसके बाद वो रिकवरेबल नहीं है। तो ओके न्यू मेंबर बन जाते हैं आप, लेकिन अगर आप नहीं भी बने हैं तो अगर वो डालते हैं तो लिमिटेशन में आता है। आई वुड ओके सर, सजेस्ट यू टॉक टू अ लॉयर हु विल गिव यू द फुल डिटेल्स ऑफ लिमिटेशन, या because I'm not going into limitation in this particular meeting, but I'm just giving you a यस सर, guideline कि पुराना डेट्स जो है या हर सब चीज में लॉ ऑफ लिमिटेशन लगता है। और अगर या नॉमिनी है और 2009 से है और आपने अप्लाई नहीं किया है, या तो फॉल्ट ऑल्सो रिमेन्स विथ यू यस सर, for not waking up to your own rights. And नहीं there are करेक्ट, judgments, very clear High Court orders, Supreme Court orders. अगर आप अपने rights पे सोते हैं, then हाँ don't expect the law to come and assist you. करेक्ट, So then you have to wake up and start the ball rolling so that आपका जो काम है वो फटाफट हो जाए। और या अपना विल बना दो, अगर आपका नॉमिनेशन नहीं है तो आप अपना विल बना दो कि ये फ्लैट मेरे नाम पर है, अभी तक नॉमिनेशन हुआ नहीं है लेकिन होगा, तो इट इज ओके प्रॉपर्टी विच इज माइन, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट, और ये मैं या इसको देना चाहता हूँ। तो अगर नॉमिनेशन नहीं भी है तो प्लीज कवर योर सेल्फ विथ अ प्रॉपर ड्राफ्टेड विल with ओके two witnesses, and then you at least protect yourself to some extent. जी मेहता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर मेरा ये क्वेरी था, मेरे फादर ने 2003 में विरार में एक घर खरीदा था, तो और 2020 में जस्ट सेल किया है, एंड माय फादर वाज द सेकंड ओनर ऑफ द फ्लैट। तो जब हमने ये सेल किया 2020 में, तो दैट टाइम और सोचा मार्च में, ये फरवरी मार्च में सेल हुआ है, और मैं हमने फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो सोसाइटी में सबमिट करने गए, जो थर्ड ओनर है। तो सोसाइटी बोल रही है कि हमें चेन सप्लाई चेन ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, इन द सेंस कि फर्स्ट ओनर का भी हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो एक्चुअली वो हम लोग को अवेयरनेस नहीं थी, फादर को अवेयरनेस नहीं थी, तो वो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। तो अभी क्या करना है? और वो बोल रहे हैं कि डीम कन्विंस के लिए अप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट एग्रीमेंट इज आल्सो मैंडेटरी। तो सोसाइटी अभी Wait, थर्ड ओनर का वो wait, एक्सेप्ट wait, नहीं कर wait, रही है। wait, wait, या wait, wait, wait. यस Don't सर, go more than one question at a time. So I'll tackle it. ओके सर, The ओके first question, chain of agreement, मेरे आज के इसमें नहीं बैठता है, but I'll still answer it. There's a judgment which says that when you are going for registration of the current, the stamp duty officer has to only check the transaction का agreement. ओके ट्रांजेक्शन का एग्रीमेंट देखना है उसको, पुराने एग्रीमेंट से स्टैंप ड्यूटी ऑफिसर का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज स्टैंप ड्यूटी इज पेएबल ऑन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। पहले ने भरा ओके नहीं भरा वो स्टैंप ड्यूटी का काम नहीं है, उसका काम है उसके सामने जो डॉक्यूमेंट आया है उसका स्टैंप कितना बैठता है वो भरो, और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट है, और गूगल करके मिल जाएगा, लॉयर विल टेल यू। दूसरा है कि सोसाइटी का बिजनेस नहीं है, आपका जो ट्रांजेक्शन है उसी ट्रांजेक्शन से सोसाइटी का बिजनेस है, और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको रजिस्ट्रार का रूट है। और सोसाइटी का बिजनेस नहीं है, दूसरे एग्रीमेंट्स पे एग्रीमेंट्स राइट है रॉन्ग है, ड्यूटी भरा नहीं भरा, सोसाइटी का काम बिल्डिंग मैनेज करने का है, और सोसाइटी का काम है सोसाइटी को मेंटेन करने का। वो आप बायलॉ में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट है, बायलॉ 4 या बायलॉ 5 है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी टू मैनेज द बिल्डिंग, नॉट टू लुक एट योर एग्रीमेंट। तो टाइटल डॉक्यूमेंट देखने का और उसको वेरीफाई करने का, या कंप्लीट है कि नहीं है, स्टैंप ड्यूटी भरा कि नहीं भरा, उस पर भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि वो सोसाइटी का काम नहीं है। सर एक सायन से सौरभ जी का सवाल है, इन केस रिलीज डीड्स आर फाइल्ड, हाउ कैन द सोसाइटी नो दैट ऑल द मेंबर्स आर ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड? शुड द सोसाइटी नॉट इंसिस्ट ऑन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट? रिलीज डीड कोर्ट में कहाँ से आएगा? रिलीज डीड इज अ एग्रीमेंट बिटवीन पीपल एंड दे हैव टू फाइल अ डिक्लेरेशन एंड दे हैव टू फाइल एन एफिडेविट कि हमारे ये लोग हैं जो हमारे लीगल हेयर हैं, और जब वो आता है रिलीज का तो एक न्यूज़पेपर ऐड डालते हैं, और न्यूज़पेपर ऐड में लिखते हैं कि हम ये हैं ये हैं, अगर किसी का और का इंटाइटलमेंट है तो प्लीज फाइल रिप्लाई टू सोसाइटी,
और अगर वो 10 दिन में 15 दिन में नहीं आता है सोसाइटी के पास डायरेक्ट, because that particular ad is that response should go to the society, और अगर सोसाइटी को कोई नहीं आता है, सोसाइटी 15 दिन और रुकेगा, and then society has to move forward. ये पब्लिक डोमेन में डाल दिया है. I wanted to understand, sir, good evening, under what circumstances the arrears of maintenance, on what grounds can they be brought down by the society? In the sense, there is a mandatory provision under the law saying that it should be 20% or something, penalty part I'm referring to. The penalty. So you have not paid the maintenance for a couple of years. So the society levies a penalty with respect to the, say, so the amount is 1,000 rupees. So the a 20% additional penalty has to be paid every month. Is that correct? The legal position talks about in such a form. So am I audible, sir? That question is audible, but this question is not related to nomination. But I'll still okay. Is it that today's topic is related? Sorry, sir. I didn't know about that. Tell you, it is not penalty; it is interest, and interest is agreed. Yes. Okay. Interest is agreed in the general body. Okay, so if the general body takes a stand that the interest has to be, say, 10%, so it can be brought down. It can be anything as not exceeding 21%. All right, thank you so much. Sir, एक Mr. Naik का सवाल है. Members has nominated his wife only. Nominated is the wife of the owner before the member, and शायद died before the member, ऐसा लिखना था उनको. And subsequently the member also died. The children have not claimed for 6 years. Now 2 children claim the ownership and wants the property to be transferred to one of them. How to go about it? The property transfer का issue आ जाता है इसमें. The question is not very clear, but I'll take a guess. Yeah, member has nominated his wife only, and subsequently the nominee, the wife has died, and thereafter owner also died, and there was no mention of his children. And after 6 years, children came forward and they wanted to get this flat transferred in their name. It's one of their name. They give the consent also. How to go about that? You will need to contact your society lawyer and he will give you the full process. There's a process to be followed. So वो process follow करना है. Otherwise, if I give you answer on this thing, it will be like I'm giving legal advice, which I would like to avoid in this lecture, because I cannot solicit business on a conference meeting. But it is doable. It is doable. There is a process. And if you go to a lawyer, they will surely be able to give you the procedure and the format. Sir, can a nominee be any person or he has to be a blood relative? You can nominate your dog, sir. It's your flat. It's your property. You can give it to me. I don't mind. So, but we must tell everybody that nominee, that provisional member, must obtain ownership through law of succession certificate or will probate. Otherwise, they don't become owner. I won't go there because there is a limitation on that. So, if he is a single hair, then there are certain conditions under which they can still qualify. No, but how do we know if the owner who died has written a will to his girlfriend or somebody else outside? How do we know? After 12 years, the limitation is over, then the girlfriend will not get it. Okay. सर एक मर्चेंट जी का सवाल है. व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सोसाइटी टू ट्रांसफर फ्लैट टू सोल हेयर in absence of the nomination after death of sole member? Is there any time limit to inform death? If yes, what is the way out? Bylaw 35, 36, 37, 38 वो पढ़ लेंगे. उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि अगर आपका नॉमिनेशन नहीं है, डेथ हुआ, न्यूज़पेपर ऐड डालना है, नोटिस बोर्ड पे लिखना है, और फिर कौन आता है सामने, कोई नहीं आता है सामने, उसके हिसाब से फिर वो पूरा प्रोसीजर लिखा है उसमें. उनका सब क्वेश्चन है, इज देयर एनी टाइम लिमिट टू इन्फॉर्म दैट? इफ यस, व्हाट इज द वे आउट? देयर इज नो लॉ ऑफ लिमिटेशन इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर. आपका प्रॉपर्टी रहेगा. जी सर. सौरभ जी का प्लीज एलाबोरेट. हाँ, उन्होंने वही बोल रहे हो अबाउट प्रोसीजर फॉर नॉमिनेशन ट्रांसमिशन इन केस of HUF where only male karta member has passed away and only female co-partners are survivor.
Now, under the new HUF, woman can also be the next karta. So I don't think that should be an issue. क्योंकि पहले था कि कर्ता will be the member. Now under the 2019 में HUF को लेके आए हैं. तो जो भी कर्ता बनेगा he will take over. तो यहाँ nomination का issue नहीं आता है. तो कर्ता will take over from कर्ता. Because if he nominates A and the karta is B, then obviously B is the new karta. और JD भी बन सकती है कर्ता अभी तो आपको. No, my question is that a person makes the nominee his daughter and she's admitted as a provisional member. But now the other family members have not objected to it. Now she continues to be the member after nomination. Now, how much time limit should be there for her to sell the flat? But nobody else have taken any objection, or she has to still advise in the paper that if any person is there, because she is just a nominee owner. Yes, but now since 5 years, nobody has taken objection. You are correct. You are correct, because they can take objections within the limitation, and then society will be have to answer why did they transfer. So it's important that when there's a sale going to happen, तो फिर वो सबको ज्वाइंट करके लाएंगे, बिकॉज भले शेयर सर्टिफिकेट पे एक नाम है, लेकिन अगर लीगल हेयर है तो फिर वो रिलीज डील बनाए, जो भी बनाना है एज लॉयर्स एडवाइस, यू विल फॉलो. The society would run the risk of transferring before the limitation and then be slapped with a legal suit by other people who will suddenly appear and say, हमने आपको कहाँ बोला सर, my silence is not consent. तो फिर वो इशू में पढ़ने का नहीं. So that means all the nominee owners, those who have been admitted as provincial members, they have to wait for 12 years to sell the flat if they want to sell. Or they get released from everybody else. There is no legal support. लिख के देंगे कि हमारा कुछ नहीं है, कुछ केस नहीं आएगा. Actually, what happens? They'll pretend that they have no family member. Only they are the sole operator. Because there are certain places where people are settled abroad. Families are not getting together. Brother doesn't want to see the sister. Parents have made the daughter the nominee. The sons and all did not raise any objection after the demise, and the flat was transferred. But now the trouble is there is no such communication. So only a paper advertisement will be okay, or like still there will be. Well, your lawyer will advise you, but paper advertisement will be important. Okay. Because you have to have a disclaimer there and paper ad to protect the society. Sir, no more questions. Thank you, madam.